guys. The response on the previous video has been amazing. So many of you asked for a house tour, so we decided to make one. So, welcome to our house. Before we show you the house, let me tell you a few things. हम लोग एक 1+1 अपार्टमेंट में रहते हैं. 1+1 means कि यहाँ पे 1 bedroom है, 1 bathroom है, 1 lounge है with an open kitchen and a beautiful balcony with a gorgeous view of mountains. It's beautiful. The size of this house is 55 meters square to 60 meters square, I think. बहुत छोटा लग रहा होगा पाकिस्तान से अगर कंपेयर किया जाए, लेकिन एक्चुअली यहाँ के हिसाब से this is a very pretty average size ये 1+1 के लिए. And it's very manageable. I think a small sized apartment is good for us क्योंकि हम सिर्फ 2 लोग हैं, हम लोग को ज़्यादा space की ज़रूरत नहीं है. And plus you know it's just easy to clean, easy to manage. So the rent of this apartment that we pay is 2,500 TL. It sounds a little steep for a 1+1, लेकिन we actually got a very good deal. That's because we are in Liman area and that's walking distance to the beach. और ये एरिया वैसे भी समर्स में जो है बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है. I mean we were looking at options from 3,000 to 4,000 TL. We got this for 2,500 TL because we paid upfront for 6 months. So it's very difficult to find an apartment that's fully furnished for this price during June, July, August months. यहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी लगा हुआ था, मतलब बेड भी था, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, सोफे, everything was already over here when we got here. और even जब हम लोगों ने किचन की अलमारियाँ वगैरह खोली थी तो अंदर से बर्तन निकले थे. Exactly. So it was a surprise for us because we weren't expecting it. हम लोग ये सोच रहे हैं हम खरीदेंगे जाके. Yeah, टीवी भी है यहाँ पे और ये पीछे किचन का सारा सामान है, मतलब ओवन भी लगा हुआ है, डिश वॉशर भी है. We really didn't have to buy anything यहाँ के. So that was about the house. अब मैं थोड़े आपको एरिया के बारे में बता देती हूँ before we get into the house tour. This area is Liman, as we said, in Konyaaltı. Konyaaltı में there are different areas that are near the beach. So all these areas are very expensive. But Liman थोड़ा सा कोने में करके है, but it's still like really close to the city and the popular shore touristy beach area. So which is why we liked it because it was a good balance और थोड़ा सा affordable भी होता है comparatively. So it's a very nice neighborhood और यहाँ पे families वगैरह भी होती हैं, so we really like it. So our apartment is in a building complex. In Antalya and I think Turkey in general, 2 किस्म के apartments होते हैं. There is a building complex and then there is a normal building. जो main road के ऊपर normally buildings होती हैं, they're not complexes. मतलब उसके अंदर swimming pool और probably gym, fitness, sauna इस तरह की चीज़ें नहीं होती, लेकिन complexes में होती हैं. But that comes at a cost. The cost is called aidat. It's a maintenance fee that you pay monthly. It could be around 50 to 400 TL depending on कितनी ज़्यादा facilities हैं आपके complex में. हमारे complex में there's a swimming pool but there's no gym, so इतनी ज़्यादा aidat नहीं है, but you know it's a good balance. So without further ado, let's get into the house tour. House tour please. Please बाद में आइएगा. Welcome to our house. So first of all जाते ही right पे हमारा lounge है. Very cute, very comfortable, बहुत cozy सी space है ये, which we love. जैसे हमने पहले बताया था कि यहाँ पे sofa, TV, table and everything, ये मोटी-मोटी चीजें सारी पहले से लगी हुई थी. There was actually a painting here, not the mirror. Mirror अंदर लगा हुआ था bedroom में. But we replaced that because painting शक्ल की थी और हमें नमाज पढ़नी होती है. पहले से ना यहाँ पे न्यू decoration pieces उन्होंने लगाए हुए थे, which I really like. I think it's really cute and it adds to the color scheme of the entire place. Speaking of color schemes, this lounge comes with an open kitchen and it matches the color scheme of our lounge. Let's show you. So this is our cute tiny सा kitchen और देखने में बहुत छोटा सा useless kitchen लग रहा है, but it's not. It's actually a very useful and very practical kitchen. इसमें there's everything that you need in a kitchen. I agree कि cabinets थोड़े कम हैं और हमें भी ये feel हुआ था, but then you know what? हम लोगों ने
यही सोच के आए थे कि हम लोग बर्तन ही कम रखेंगे। ये मटका आप सोच रहे होंगे कि क्यों रखा हुआ है, वो इसलिए रखा हुआ है क्योंकि हमने आज बिरयानी मंगवाई थी पाकिस्तानी। I don't know if it's a restaurant or what delivery service है, but they deliver home cooked Pakistani meal. Amazing. So यहाँ पे फ्रिज भी पहले से लगा हुआ था, so we didn't have to buy a fridge. Let me show you something very interesting. Come here. So these are our magnets. ये तो हम लोग अपने साथ लेके आए हैं. These are, we have this thing where we collect magnets of every place we go to. तो हम लोगों ने मलेशिया का है, यहाँ पे मालदीव्स का है, अंतालिया, कैफेडोकिया एंड फितियर फ्रॉम द लास्ट टाइम वी विजिटेड इन अक्टूबर. There was one for Bali as well, but I broke it क्योंकि वो पत्थर का था, मुझसे गिर गया, वो टूट गया, अंदर रखा हुआ है. बट you know we have it, और जब से मुझे एल्फी या सुपर ग्लू मिलेगी मैं उसको जोड़ के यहाँ वापस लगा दूंगी. So ये जो है ना 2, ये पहले से लगे हुए थे यहाँ पे, ये 3. यहाँ पर ना there's this really cool trend के instead of giving a business card, people give you a fridge magnet. कोई भी शॉप पे जाओ या कुछ भी for home delivery या कोई भी ऐसी चीज़ है ना आपको नंबर याद करने के लिए, तो they give you a magnet so you can stick it on your fridge. We've seen pictures of houses, उनके literally fridges ज़मीन तक भरे हुए होते हैं with magnets of all kinds. This cabinet right here is probably the best part of the house. Zain and I love this cabinet. It's so useful. इतना बड़ा cabinet है, इधर हमारे जूते भी आ जाते हैं, इधर सब कुछ आ जाता है. Literally, this is like the everything cabinet. It has around, I think, how many compartments, Mano? 7, 8? Let's give you a look. Whoa. ज़्यादा लेकिन ज़्यादा गौर से ना देखना क्योंकि बहुत ज़्यादा messy है. Now let's check out the bedroom. इनको देख लो पहले भाई. Hello. House tour हो रहा है मनु? हाय कर दो. He does not give a... So this is our cute little bedroom, just as cute as the lounge. Honestly ये घर बहुत cute है यार. और ये हमारा favorite part of the bedroom because अलमारी बहुत spacious है and we love it. और the AC was already there bedroom में, which is a really good thing. हम लोगों ने ना ये स्पंज यहाँ पे अड़ाया था क्योंकि ये खराब था, मतलब and I don't know why we never bothered to tell anyone about it. मतलब we could easily get it fixed, you know. Yeah, but anyway. Life hack. अगर ये खराब हो तो स्पंज रख दो. मतलब इतना अच्छा life hack था कि we forgot we had a problem. वाकई. अच्छा, so the really good thing about this house and this room is the amount of natural light. मतलब यहाँ पर ना सीधी धूप आती है पूरे कमरे में जैसे आपको दिख रहा होगा. एंड 2 बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं और बाहर भी इसी तरह है, तो वी एक्चुअली लव दैट. और जैन को तो स्पेशली हमेशा से इतना ज़्यादा शौक है नेचुरल लाइट का. सारी दुआएं कबूल हो गई हैं जैन. अल्हम्दुलिल्लाह नेचुरल लाइट आ रही है. Another good part, the view. नेचुरल लाइट के साथ साथ ना इस खिड़की का ये फायदा है कि जब मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे एक बहुत बहुत ही खूबसूरत मंजर दिखता है. और कभी कभार ये भी मंजर दिखता है कि बच्चे स्विमिंग कर रहे होते हैं. एक बार पाई भी कुछ होता है. But you know, सामने mountains नजर आ रही हैं, so it's you know it's nice. And we also have this intercom, which is a blessing. Actually हमारे पास कराची में होता था when I was in Karachi, but Zain and I didn't have an intercom in Lahore, and we lived on the first floor. और हम लोगों को बार-बार नीचे जाना पड़ता था whenever someone rang the bell. खैर यहाँ पर we got one built in, and we can literally like buzz in anyone. And now for the best part, the balcony. So that's it for the house tour. We hope you enjoyed it as much as we enjoy this house. Now I will show you around the building complex. So let's go. So our building complex has 2 buildings, ठीक है, Block A and Block B. तो इसके 2 दरवाजे हैं, एक मेन एंट्रेंस पे दरवाज़ा है और एक हमारी बिल्डिंग का अपना दरवाज़ा है, ठीक है. तो दिस इज़ द प्लेस वेयर वी पार्क आवर साइकिल्स. आई शो यू. ये सबकी साइकिल्स खड़ी हुई हैं एंड दिस पिंक वन इज़ मानूज एंड दिस वन इज़ माइन एंड दिस इज़ अ पार्किंग लॉट ओवर हियर. And I'll also show you the swimming pool. और ये हमारा actually this is our balcony. So yeah.
So that was the pool. अच्छा अब मैं जा रहा हूँ मेन पे to show you the building, the main door that we have outside. Another really good thing about building complexes is that it's pretty safe, right? तो होता ही है कि जब आप यहाँ पे आते हो तो you get number, पासवर्ड होता है जो कि आपको मेन गेट पे एंटर करना पड़ता है एक, ठीक है? तो ओनली द रेजिडेंट्स नो दैट पासवर्ड. तो एक मेन गेट पे करना पड़ता है और एक आपको अपनी बिल्डिंग में जब आप आते हो तो वहाँ पे एंटर करना पड़ता है. So this is the main door. Simply open it and we'll just come outside. That's pretty much it. और this is what I was talking about कि अगर A block में जाना है तो you press the numbers, जो भी apartment number है, and then you press call, and the same for B block. We live in B block. हमारी balcony से ये view है हमारा. This is the gym, ठीक है? वो एक अंकल जिम कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है? And then this is the park. And there's also a dog park right over there. Right now there isn't any dog inside, लेकिन dog park है, सही है? And it's pretty pleasant right now. Fit मौसम हुआ है. And those are mountains. ये हुरमा के सारिसू और हुरमा की mountains हैं और it's pretty cool. हमारे घर के बिल्कुल करीब ना एक मार्केट भी है, ठीक है? और where we go for our normal grocery shopping के लिए हम लोग वहीं पे जाते हैं. It's called बरकत मार्केट, हम लोग बरकत मार्केट बोलते हैं. तो और they also अगर आपने कुछ ऑर्डर करना है तो 5 मिनट के अंदर वो घर आपके आ जाता है. Oh, I forgot to tell you the best part about living here. We are 20 minutes away from the beach. I hope you enjoyed the video. I'll see you in the next one.